Good morning, students. So in the last class, we have finished up to this. We have calculated the value of P, which is equal to minus 240 by EI. Eccentricity we have calculated minus 3.43, and why it is minus, that I also told you, because it is located to the left of CG. So it is minus we have taken. Then MYY we have find out 823.2 by EI. Then we'll move to the next step, that is the step number 6, basic equation of column analogy method. So this is the basic equation of column analogy method. MI, I means indeterminate moment. So this equation is used for the calculation of indeterminate moment, that is axial stress plus bending stress. So axial stress is P by A plus MYY by I by Y into X. So this is the general equation for the column analogy method, MI. So this P value we have calculated MYY. Then area we have find out. Okay, in the analogous column section, this property we have find out area of analogous column section and moment of inertia. P is property of loadings we have find out, and this is the moment of inertia. So that value we have to put in this equation, and this value MYY by I by Y into X. So this equation you will get. If you simplify this, you will get this equation, minus 68.57 plus 33.63x. So this is the one equation we are getting in indeterminate moment. Now to find out the value of MIA and MIB, we have to put the value of x in the equation. So that we will see. So therefore the indeterminate moments at A and B are. Okay, so here we have to put the value of x here. So you just concentrate here how to put the value of x here. Here I will plot the analogous column section. Okay, so analogous column section already we have plotted it. So you can take the reference of that. So analogous column section, it is 1 by 3 EI and 1 by 2 EI. So if you have drawn it in your copy, then it will be easy to you. So this is 1 by 3 EI and this is 1 by EI. Okay. So x bar is equal to 4.93. So x bar is 4.93. So we have located that x bar. This is YY, and x bar we have located at a distance of 4.93 from point A. Okay, so this is x bar of the analogous column section. So already we have done this step. Now we have to put the value of x to get the moment MIA, and we have to put the value of B to get the moment MIB. Then what will be the value of x and what will be the value of x at B? So total distance, total span of the beam is equal to 9 meter. Okay, so ये जो distance है A to C, ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है. x बार है 4.93. तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी MIA, that is MIA at
x is equal to always x bar. MIA at x is equal to is always x bar. आपको y एक्सिस से जो a पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो वो ऑलवेज जो रहेगा वो x बार रहेगा. तो x की वैल्यू MIA at x is always x बार 4.93, क्योंकि अबाउट y एक्सिस आपको a पॉइंट कितने डिस्टेंस पे लोकेट है वो x डिस्टेंस पुट करना है. ठीक है, तो दैट x is always x bar to get the value of indeterminate moment at a. So that x bar is 4.93, but at a point is located to the left of CG. This is a negative value रहेगी और b के लिए x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी because it is located to the left of CG. इसीलिए x is equal to x bar, we have put it minus 4.93. So that value will become minus 4.93, which is left of CG. ये आप लिख लो साइड में, लेफ्ट ऑफ CG है, इसलिए x की वैल्यू x बार है वो minus 4.93 पुट किया. उसके बाद we have put this value x in this equation. So minus 68.57 plus 33.63 into minus 4.93, you will get indeterminate MIA minus 234.37 kilonewton meter. Then MIB. So MIB at x is equal to, so total distance is 9 meter. Total is 9 meter. So 9 minus about from y axis, at what distance this B is located. ये B y axis से जो CG से है वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है वो अपने को फाइंड आउट कर. तो ये जो डिस्टेंस है, तो टोटल स्पैन 9 मीटर. सो ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो मिलेगा 9 माइनस 4.93. 9 माइनस 4.93. So 9 minus 4.93, you will get 4.07. You will get 4.07. And why it is plus? Why it is plus? Because B point is located to the right of y axis. इसीलिए right of axis है, right of y है, value of x will be plus 9 minus 4.93. So we'll put that value here in this equation. You will get the indeterminate moment at B. So we'll put the value of x here. So you'll get indeterminate moment is 68.30. Okay. So जो जनरल इक्वेशन आपको मिल रहा है mi, उसमें x की वैल्यू a के लिए a x बार रहेगी, बट इट इज लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है इसलिए माइनस रहेगी, और b के लिए टोटल स्पैन माइनस x बार रहेगा विच इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू. वो प्लस रहेगी बिकॉज b इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ CG, इसलिए ये प्लस रहेगी. सो विल गेट द इनडिटरमिनेट मोमेंट एट a and indeterminate moment at B. Okay, so this is the indeterminate moment. Now the last step, you have to calculate the final moment. Final moment. So general equation for the final moment is, ये आपको ध्यान में रखना है, m is equal to ms minus mi. ms means statically determinate moment and mi means indeterminate moment. So you have to find out the end moment. कॉलम एनालॉजी से सिर्फ आपको एंड मोमेंट मिलेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट मिलेगा. सो फाइनल मोमेंट एट ए एंड फाइनल मोमेंट एट बी. सो एम ए विल बिकम एम एस ए माइनस एम आई ए, एम एस ए माइनस एम आई ए. सो एम एस ए, एम आई ए एम आई बी ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया. सो एम एस ए इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट मोमेंट एट ए. Statically determinate moment at A. S means statically determinate moment. I means indeterminate. So MIA. So MSA minus MIA हो जाएगा, और MB will be equal to MSB minus MIB. MSB minus MIB will be equal to, you'll get the value. Then how to take this value of MSA and MSB? So for that you have to refer the MS diagram.
You have to refer the MS. So in step number 4, if you see this step number 4, when you refer the notes, where you can see the MS diagram. Already I have explained that diagram. So that diagram जो आपको मिला after making the structure determinate, we got the diagram is MS diagram is like this. This MS diagram we got. And why it is curved? Because there is a UDL. ये UDL यहाँ पे है, इसीलिए जो MS डायग्राम मिला, MS डायग्राम मीन्स इट इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में. तो यहाँ से आपको MSA और MSB की वैल्यू फाइंड आउट. सो फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम MS डायग्राम you have to note down the value of MSA and you have to note down the value of MSB from MS diagram. So after plotting MS diagram, note MSA and MSB in that step also. Okay, because use of that is here in to calculate the final. तो ये जो moment था, that moment was it is 360. ये जो moment अपने को मिला था, moment at A 20 into the 6 into 6 by 2, so that's 360. और ये moment अपने को minus मिला था. Okay, so this is point A, ये point C है, and this point is B. Okay, this is MS. So here to find out the value of MSA, MSB. So MSA is nothing but moment at A. Moment at A. तो A पे moment कितना आया था अपना? minus 360. A पे moment आया था minus 360. And what is MSB? Statically determinate. Why it is called as determinate moment? Because we have made the structure as determinate. उसके बाद अपन ने उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला था, इसीलिए MSA MSB इसको डिटर्मिनेट मोमेंट है और MIA MIB ये इनडिटर्मिनेट मोमेंट है यूजिंग द कॉलम एनालॉजी. सो MSA हो जाएगा minus 360 and what is the value of determinate moment at B? B पे मोमेंट कितना है? MSB will become 0. Always B सपोर्ट रिमूव कर दिया है, मतलब B पे मोमेंट 0 रहेगा, MSB 0. MSA मतलब जितनी भी लोडिंग है उसके अकॉर्डिंग A पे कितना मोमेंट आ रहा है, that you have to. So that will be your MSA and MSB. So we'll put this value in this equation. So MA is equal to MSA minus MIA. So MSA is minus 360 minus final moment है MS minus MI. So MSA minus MIA. So minus 360 minus of MIA कितना मिला? Minus 234. So minus of minus 234.37, you will get the final moment at A. It is minus 125.63. Minus 125.63 kilonewton. Then similarly find out the moment at B. MSB minus MIB. MSB statically determinate moment at B. B पे moment 0 है. So we will use 0. And MIB कितना है? 68.30. So 0 minus 68.30, you will get minus 68.30. So these are the final moment you will get using the column analogy method. इसीलिए आपको पहले determinate moment निकालना पड़ेगा by making the structure at determinate at A and B, only at the corner, only at the supports. Okay, because using column analogy, you will get only the end moment. And MIA, MIB using the column analogy equations. So by using this equation, you will get MA and MB. Once you will get the final moment, you will be able to draw the bending moment diagram. Okay. So here the sign conventions, hogging moments are negative and sagging moments are positive. Okay. So that end moment we will show here. So this is how plotted the bending moment diagram. Actual structure is this. This is the actual structure, indeterminate. तो indeterminate moment, final moment मिल गया. ये आपको MA मिल गया 125.63. Both the moments are negative. Okay. So these are the hogging moments. Hogging moments also. Then this is the partial loading. This is the actual structure. So you can plot the shear force diagram and the bending moment diagram. तो reactions आप निकाल सकते हो. Once you get the reaction, you can find out this x value 4.32 by using the similarity of the triangle,
and then you can plot the bending moment diagram. So this you'll get the net bending moment, and here at this x you can find out the bending moment value at x is equal to 4.32, which is equal to 60.80. So this is your bending moment diagram. This is your moment shear force diagram, and this is your bending moment diagram. Okay, so that you just refer, and this is how we can solve the problem of analysis of beam using the column analogy method. Okay, so in the same way, in the first problem also you have to put the value of x. Again I will show you the bending moment diagram for the first problem. Okay, so that also you can see that, and then I will give you the notes so that you will be able to understand each and every step. So okay, so this is the first problem which I have taken, that is for the unit loading. Unit load I have taken. तो इसमें भी अपन ने यहाँ तक देखा था फर्स्ट प्रॉब्लम में इनडिटरमिनेट मोमेंट, अभी एक्स वैल्यू कैसे पुट करना है एट ए और बी के लिए वो मैंने आपको बताया था. एक्स एम आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, और जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसमें से एक्स बार माइनस करोगे तो आपको एम आई भी मिल गया. तो ये सेम इनडिटरमिनेट मोमेंट, उसके बाद फाइनल मोमेंट आपको मिलेगा एम ए एंड एम बी, एम ए से एम एस बी. सो सिमिलरली एम ए से एम एस बी कैलकुलेट करने के लिए आपको एम एस डायग्राम रेफर करना पड़ेगा, और ए पे आपको मोमेंट मिला था -600, दैट एंड बी पे ऑलवेज मोमेंट 0 रहेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द फाइनल मोमेंट. देन दिस इज द, यू कैन सी दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. दिस इज द एंड मोमेंट वी गॉट, and this is the first problem of point load I have taken. So this is the shear force diagram. This is the support moment diagram. This is the span moment diagram. Okay, this is the end moment is minus है, so ये आपका support moment diagram हो गया. This is the span moment of free bending moment diagram we can say, which is equal to WAB by L, and then superimpose. Okay, so this is also the one way of plotting the bending moment diagram. ओके, और जो यहाँ पे हाईलाइट किया है ये आपका नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया. और यू कैन गो विद दिस बेंडिंग मोमेंट एंड shear force diagram. This you can calculate the reactions, you will get the shear force diagram, and this will be your bending moment diagram. ओके, सो यहाँ पे जो शो किया है ये आपको बेंडिंग, ये 200 जो है, दिस 200 इज कंप्लीट वैल्यू. This 200 means this is the total WAB by L, ये पूरा ऑर्डिनेट. ओके, और इतना अगर आपको फाइंड आउट करना है, यू कैन फाइंड आउट, यू आर हैविंग द रिएक्शंस, यू कैन फाइंड इट आउट. ओके, और 81.08 plus 113.51 by 2 you will get that value, so that is 97.3. Okay, so in this way you can plot the bending moment diagram and the shear force diagram. So you just refer this note, then by seeing this you will be able to plot the shear force diagram and the bending moment diagram. Okay, so this is the two problem. You just refer this, I will send you this notes, you just go through this problems and try and understand this method. Then I will go to the next third problem. Okay, first problem I have covered of point load, second problem is of UDL. Okay, I have taken only the 2 span beam. Okay, so these steps we have followed. Now I will go with the third problem. Okay, where we will consider the 3 span beam. So this is the third problem. You can see here. So this is the, again you have to analyze the beam given by the column analogy method. You have to determine the fixed end moment and you have to plot the bending moment. The type of the loading is point load. Only there is a point load, only one type of the loading is there, but this is the 3 span beam and moment of inertia is not constant. So how the problem will get changed and how the MS diagram will get changed, that we will
see here. Okay, so again, if you are not getting some steps in the first or two problem, we will see the steps here again. Okay, and try and understand that how to solve the problem. Steps will be same as it is, only there will be change in the analogous column sections and your MS diagram or MS by EI diagram. Okay, so here you can see that this is the beam ABCDE. Okay, and 100 kilonewton load is acting at a distance of 5 meter from A. Okay, and whatever the analysis we are going here, that is only for the analysis of fixed beam. Okay, so this is the solution. First step is always to find out the degree of static indeterminacy. So degree of static, again axial deformation, two reaction will be at end A, that is RA and MA, and two reaction at B, that is RB and MB. So four unknown reactions are there, four unknown reaction and two available conditions of equilibrium. So the structure is statically indeterminate to 2. You have to remove support B to make the structure as determinate. So this is a very simple step to calculate the degree of static indeterminacy. Then step number 2, it is the analogous column section. Again, you concentrate here how to plot the analogous column section. How to plot the analogous column. So this analogous column section, you can see that the moment of inertia is A to C, it is I. Then C to E, it is 3I. At point D, there is a 100 kilonewton now. Newton load is acting. And E to B, there is a moment of inertia is 2I. Okay, so this you can show it in this way also, so that you can plot the analogous column section. So the analogous column section, it is exactly the opposite of this. Okay, so this figure you can show in this way, that is, this is A to C, it is the moment of inertia is I. Then from C to E, the moment of inertia, it is 3I. Okay, C to E, the moment of inertia is 3I. And from E to B, the moment of inertia is 2I. The moment of inertia is 2I. So you can show it like this. Okay, either the figure can be shown in this way or the figure can be shown here. So this is I. By directly showing it, ये जो width है ज़्यादा है तो ये 3I है, और ये थोड़ा 3I है, I मतलब I से थोड़ा ज़्यादा है तो ये 2I है. Okay, this width is I, this is 3I. C to E, A, this point is C, this point is E, and this point is B. And where somewhere here from point A 5 meter पे 100 kilonewton load is acting at point D. So ये 3 मीटर है तो बचा वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये है 2 मीटर, ये 2 मीटर रहेगा. Okay, you can see here this C to D distance will become 2 meter. Okay, so this is a given problem. This is a given. Either the problem will be shown like this, but I means क्या, width of this I, this is 3I, and this is 2I. Okay, for a given beam, the value of I. Now in the step number 2, you have to plot the analogous column section. So analogous column section means the length of the member will be same, but the total span of the beam कितना है, 9 meter. Total span beam is 9 meter. So analogous column section, when we will plot, the span of the analogous column section will be same as the length of the beam. This beam now we have to represent at the analogous column section. ये beam आपको represent करना है in the analogous column section. Okay, so we will refer, this is a given beam, this is a given beam. Okay, now we have to replace this given beam to the analogous column section. Okay, so analogous column section, it is a 1 by EI diagram. ये आपको ध्यान में रखना है. Length will be same, मतलब length पूरा आपका 9 मीटर रहेगा, but ये जो width है वे to
A to C, ये I है given beam में, that will become 1 by EI degree, exactly opposite to it. Okay, so 1 ये width हो जाएगी 1 by EI. Okay, C to E जो width हो जाएगी वो होगी 1 by 3 EI, और E to B जो width हो जाएगी वो हो जाएगी 1 by 2 EI. ओके, अभी 1 by EI 1 by 1, इसका रेशो 1 है, 1 आएगा. 1 by 3, 1 by 3 का रेशो समथिंग पॉइंट में आएगा, और 1 by 2 का रेशो 0.5 में आएगा. 0.5 मतलब जब आप प्लॉट करोगे तो अकॉर्डिंगली जो रेशियो आ रहा है वैसी विड्थ आपको शो करना पड़ेगा. सो 1 by EI ज्यादा रहेगा, उसके बाद 1 by 3 EI एकदम से कम विड्थ रहेगी, और 1 by 2 1 से कम रहेगा. So accordingly you have to plot the analogous column section. So here I will show you how to plot the analogous column section. First A to C 1 by EI diagram. Okay, so 1 by 1 हो जाएगा. Secondly 1 by 3 EI. So ये इससे कम हो जाएगी 1 by 3 EI, and उसके बाद 1 by 2 EI. Okay, तो ये थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगा विड्थ. Okay, तो ये 1 by 2 EI. Okay, so ये जो विड्थ हो गई ये हो गई 1 by EI. Okay, because your analogous column section it is 1 by EI diagram. ये विड्थ हो गई 1 by 3 EI. 1 by 3 EI. Okay, and this width will become 1 by twice EI. Okay, तो अभी आप रेशो में उसको समझ सकते हैं. 1 by 1 यानी ज्यादा, 1 by 2 यानी 1 से थोड़ा कम, और 1 by 2 है, 1 by 3 है, 1/3 है यानी इससे थोड़ा कम. ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, होगा एनालॉगस कॉलम सेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू योर बीम, बिकॉज इट इज 1 by EI डायग्राम. ओके, तो ये आपको मिलेगा. इफ यू सेपरेट दिस यू विल गेट 3 सेक्शन, बिकॉज 3 स्पैन बीम है. तो ये मिल गया सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3. 3 रेक्टेंगल्स में ये एनालॉगस कॉलम सेक्शन डिवाइड हो जाएगा. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है that distance is 3 meter. Okay, this distance is 4 meter and this distance is 2 meter. Okay, this 3 meter, 4 meter and 2 meter. The length is 3 same रहेगा, length is same but width will be 1 by EI. Okay, and this is your reference point. This is your reference point. This is point A, point C, point E and point B. Okay, so once you plot or draw the analogous column section, I think now you will be able to plot the analogous column section. Once you plot the analogous column section, you have to find out the area, you have to find out the x bar, and you have to find out the IYY. Okay, area means A1 plus A2 plus A3, x bar you can calculate and you can find out the IYY. ये पूरी steps मैंने how to find it out that already I have explained to you. So we'll go to the next step. Then step number 3. So here you can see that this is the analogous column section. It is to be drawn. Already मैंने आपको बताया कि कैसे प्लॉट करना है. फिर देखो यहाँ पे 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया. ये विथ 1 by EI, 1 by 3 EI, 1 by 2 EI. Okay, now we will find out the properties of the loading. That is properties of the analogous column section. Okay, so the first property will be the area of the analogous column section. So area of the analogous column section, that is L into 1 by EI. L into 1 by EI. So L is first area A1 plus A2 plus A3. Okay, A1 plus A2 plus A3. So that we can find out. Okay, if you're having calculators and pen with you, you just calculate it and compare your value with this value. Okay, so this is again I will plot here. This is the 3 section divided 1, 2, 3, and this is 1 by 3 EI. This is 1 by EI, 1 by 3 EI. This is 1 by EI, sorry, and this is 1 by twice EI. This length is 3 meter, this is 4 meter, and this is 2 meter. Okay, so now you will be able to find out. So this is first area A1 3 by EI plus 4 by 3 EI plus 2 by 1 by twice EI into 2, that is 2 by 2 EI. So this will be equal to area will become
5.33 बाय EI। ये आप कैलकुलेशन चेक कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक्स बार लोकेट करेंगे। ओके, सो एक्स बार के लिए रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज यू टेक पॉइंट ए इज योर रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ए इज योर रेफरेंस पॉइंट। तो पहले रेक्टेंगल x1 होगा, सेकेंड इज x2 एंड थर्ड इज x3 एंड x bar you can calculate with the help of this equation, that is a1 x1 plus a2 x2 plus a। तो a1 is area 3 by EI into x1 पहला रेक्टेंगल 3 by 2 that is 1.5 plus a2 into x2, a2 into x2 area of second rectangle that is 4 by 3, so it is 1.33 by EI into 5। अभी 5 कैसे आया, सेक्शन आपको रेफरेंस लेना है पॉइंट ए, तो पहले रेक्टेंगल 3 प्लस 4 बाय 2, तो ये आएगा 3 प्लस 4 बाय 2। ओके, सो 3 प्लस 4 बाय 2 विल बिकम 5 प्लस थर्ड रेक्टेंगल एरिया 1 बाय EI into CG of the third section from reference A. So 3 plus 4, 7, 7 plus 1.5, 7 plus 1 because this is 2, 7 plus 1 is 8. Okay, so 3 plus 4 plus 2 by 2. Okay, so you will get 8. Okay, so this is a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by whole area, you will get x bar, that is 3.59। 3.59 यानी 3 मीटर ये पहला डिस्टेंस है, 3.59 है, मतलब C जो पॉइंट है उसके जस्ट राइट आपका x बार लोकेट होगा, यानी यू कैन लोकेट द y एक्सिस। ओके, सो दिस इज द y एक्सिस इज टू बी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.59 that you can see, figure is there, you can see the figure। okay, x bar is located 3.59। now you have to find out the moment of inertia, that is IYY। तो IY के लिए मैंने आपको बताया है, it is a parallel axis theorem you have to use, moment of inertia about YY axis passing through CG, so that is IY। so IY1 plus IY2 plus IY3। okay, there are 3 sections, so 3 values you have to take। so IY1, so for the first figure, so you can see here for the first figure db cube by 12, ये भी आपको बताया है, so that is IYY। IY1 तो ये हो जाएगा IY01 plus A1 into x bar minus x1 whole square, plus similarly for second and for third, so IY01 it is db cube by 12। तो पहले इसमें फर्स्ट रेक्टेंगल फर्स्ट सेक्शन, व्हाट इज D? D इज 1 by EI, D है 1 by EI और B कितना है 3 है, so 1 by EI into 3 cube by 12 plus area into x bar minus x1। x1 means CG of the first rectangle, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का CG कितना है 1.5, तो ये होगा ये फर्स्ट प्लस IY2 अगेन IY02 plus A2 into x bar minus x2 whole square, so A2 is area of second into x bar minus x2 whole square, this is D। सेकेंड सेक्शन का D कितना है, विड्थ कितनी है 1 by 3 EI into B 4 है, so db cube by 12 plus for the third section, that is third section width is 1 by twice EI into B, so this is db cube by 12 plus 1 by EI into 3.59 minus 8 whole square। okay, so you just simplify this, you will get the moment of inertia, just cross check your values with this value। okay, so the moment of inertia of the analogous column section is 39.55 by EI। X bar of the analogous column section is 3.59 and area of the analogous column section is 5.33 by EI। so ये values आपको find out करना है after plotting the analogous column section, ये आपको find out करना है
after plotting the analogous column section, value of A, value of x bar and value of IYY 39.55 by EI. उसके बाद after that step number 4 same steps follow करनी है. After that step number 4 is to make the structure as determinate structure. Okay, to make the structure as determinate. So we will remove support B to make the structure. As it is structure निकालना है, only remove the support B support, we will get the determinate structure. So show it I, 3I and 2I. ये as it is दिखाना है आपको. ये हो गया determinate structure. ये हो गया determinate structure. Okay. उसके बाद you have to plot the MS diagram. This is the first figure. This is the second, and this is C. Then here I will change tell you that how this MS by EI diagram will get changed if the moment of inertia is different for different portion. Okay, so I think you will be able to understand how to draw the determinate structure. Only I have removed the support. All I have shown it as it is. Only you remove the support B. Then the second figure we have to plot the MS diagram. तो MS diagram निकालने के लिए आपको साइड में मैंने बताया है, you take a section XX, you write down it in your copy because it is not included in the notes. ये डायरेक्टली मैंने प्लॉट किया है, ठीक है, it is not included. So you so to plot the MS diagram, you take a section XX. तो जहां पे लोड है, जैसे 100 किलो न्यूटन लोड is acting at point D. Okay, to use take a section XX at a distance of X from point D. जहां पे लोड है वहां तक आपको X डिस्टेंस लेना. इसके बाद यहाँ पे पॉइंट B है. ओके, तो आपको कभी भी जहां पे लोडिंग है, जहां तक लोडिंग है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन चूज करना है. राइट हैंड साइड में लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है. बिकॉज इसीलिए आपको कभी भी जो मोमेंट है, ये फोर्स है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन चूज करना है टू फाइंड आउट द मोमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन द गिवन फिगर, यहाँ से A to C जो डिस्टेंस है, A to C that is 3 meter. Okay, तो somewhere C point here I will write down 3 meter है, और 100 किलो न्यूटन लोड आपका A से 5 मीटर है, यानी बचा हुआ जो डिस्टेंस है C to D. So C to D is distance is 2 meter. You can see A to C is 3 meter and C to D is 2 meter. ओके, तो यहाँ पे आपको जो मोमेंट निकालना है, मोमेंट XX, वो आपको मोमेंट एट निकालना है, मोमेंट एट D, मोमेंट एट C and moment at A. Why moment at C we will calculate? Because I is not constant here. A to C the value of I is 1 and C to D the value is 3I. इसके पहले जो प्रॉब्लम अपन ने लिए थे उसमें I कांस्टेंट था, इसलिए MS by EI डायग्राम में देयर विल बी नो चेंज. बट यहाँ पे I चेंज हो रहा है, इसीलिए यू विल गेट द मोमेंट एट दिस पॉइंट. और यहाँ पे लेंथ भी चेंज हो रही है. C point is 3 meter, C to D it is 2 meter. So you will calculate the moment at D. You have to calculate the moment at C, and you have to calculate the moment at A. So first we will find out the equation of MXX, moment about XX for this loading. Only there is a point load. Okay. So at a distance of X, we have taken it from point D. So again it is rotating in the clockwise direction. So clockwise is minus. Yes. Yes. 100 लोग की लिमिट हो रही है. हाँ, मतलब उसके आगे नहीं ले रहे क्या? बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे. हाँ, वो अभी प्रॉब्लम होगा. मैम फिर कैसा
वो लोग पूछ रहे हैं अब कैसा करना है। अभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा बाद में, 2 सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आई विल कंटिन्यू विद दिस। बाकी अगर जितने लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं हाँ उनका फिर मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अब इफ दे आर इंटरेस्टेड, क्योंकि अभी फ्राइडे से आपकी एग्जाम भी चालू हो रही है। हाँ अभी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, मतलब होने वाला है ये, अब तक के चल रहा था, आई थिंक मंडे से, आज से प्रॉब्लम चालू हो गया, हाँ तो मैम। वो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा बाद में आफ्टर योर एमएससी। तो उनकी मैम लिस्ट बनाने बोल दो उनको, किनकी लिस्ट? जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। कौन बनाएगा, किसको पता हम है? वही वही लोग बनाएंगे ना। हाँ वो बनाएंगे, फिर वो मेरे से ठीक। कांटेक्ट करेंगे। ओके। ठीक है, अभी जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं वो कंटिन्यू कर लो। ठीक है, ओके फिर मैम। एमएससी के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके। So moment about xx, it is minus 100 into x, minus 100 into x. Then again at x is equal to 2, moment we have to find out. So at x is equal to 2, moment you will get at point C, MC. Okay, उसके पहले at x is equal to 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहेगी, C पे x की वैल्यू 2 रहेगी और A पे x की वैल्यू 5 रहेगी। ओके, तो ये आपको लिमिट पुट करके मोमेंट एट D, मोमेंट एट C एंड मोमेंट एट A निकालना है। सो एट x is equal to 0, you will get moment at D which is equal to 0. Then moment at x is equal to 2, moment at C, that is minus 100 into 2, which will be minus 200. So you'll get the moment at C which is minus 200. Then at x is equal to 5, at x is equal to 5, you will get moment at A. So x is 5, so moment at A minus 100 into 5, that is minus 500. ये आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ मैंने ये आपको बताया है। सो 100 इंटू 2, सी पे मोमेंट मिलेगा 200, 100 इंटू 5, ए पे मोमेंट मिलेगा 500 और डी पे मोमेंट रहेगा 0. Okay, so accordingly you can plot the MS diagram which is called as the bending moment diagram. Okay, and D to B वो straight line रहेगा। तो ये हो गया MS diagram, ये मिल गया MS diagram which is a bending moment diagram. A पे moment 500, C पे moment 200, D पे और moment 0. Both the moments are minus. So this is you will get the negative bending moment diagram. Okay, just to the below of this line. Okay, so see to now after plotting this MS diagram, here in the step you note MSA value and MSB value. यही इसी स्टेप में MSA और MSB की वैल्यू नोट डाउन करो। Why? क्योंकि ये फाइनल मोमेंट जब आप निकालेंगे तब इसकी वैल्यू आपको वहां पे पुट करना है। तो MSA कितना हुआ, ए पे मोमेंट कितना है 500 माइनस MSA मतलब MA कितना 500 माइनस, तो MSA इज माइनस 500 और MSB B पे मोमेंट कितना, ये सपोर्ट रिमूव कर दिया तो B पे हमेशा मोमेंट जो रहेगा वो 0. सो MSA इज माइनस 500, MSB इज 0, क्योंकि फाइनल मोमेंट निकालने के लिए आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला है उसका एंड मोमेंट ए पे कितना मोमेंट है और बी पे कितना है वही चाहिए। तो ए पे है MSA माइनस 500 और MSB 0. तो ये हो गया MS डायग्राम, दिस इज अ MS डायग्राम. ओके, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 500, उसके बाद विल प्लॉट MS बाय EI डायग्राम, will plot the MS by EI diagram. Okay, so यहाँ पे to plot the MS by EI diagram, यहाँ पे आपको value of EI देखना है। तो A to C जो moment of inertia है, this is point C
तो A to C जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I, एंड C to D द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3I। तो सेम फिगर आपको प्लॉट करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऑलरेडी इट इज प्लॉटेड। ओके, सो सेम आपको फिगर प्लॉट करना है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट C, दिस पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट D। D पे मोमेंट 0 है, ओके, एंड A पे मोमेंट 500 है। ओके, बट दिस A to C it is I, एंड C onward C to E it is 3I। मतलब ये जो है ये 3I है। अभी आपको MS by EI डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, MS by EI डायग्राम। तो MS by EI डायग्राम प्लॉट करने के लिए ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज 200 बाय EI, ये है 200 बाय EI, ये है 500 बाय EI, 500 बाय EI। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का I देखो आप I, ओके, तो ये 500 बाय EI हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे C पे मोमेंट कितना मिल रहा है अपने को, -200, विच इज वी हैव शोन हियर। ये वाला -200 है। ओके, सो ये जो है ये दिस इज अ 200 बाय EI, दिस इज 200 बाय EI, दिस इज 200 बाय EI। ओके, दिस इज 200 बाय EI। ओके, उसके बाद यहाँ पे D पे जो है दिस इज 200 बाय EI। उसके बाद जो आपको मोमेंट एट D है यहाँ पे ये 0 मिल रहा है, बट C to D दिस इज चेंजिंग, C to D दिस इज 3I। तो यहाँ पे 3I है, मतलब आपका जो सेक्शन मिल रहा है ये इस तरह से मिलेगा। ओके, ये इस तरह से मिलेगा। तो ये आपका ऐसा डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको एक फर्स्ट रेक्टेंगल मिलेगा। ओके, फर्स्ट सेक्शन विल बी योर रेक्टेंगल, ये वाला, एंड सेकेंड ये रेक्टेंगल मिलेगा। सेकेंड आपको जो मिलेगा दैट इज ट्रायंगल। ओके, और थर्ड आपको जो मिलेगा ये अगेन आपको ट्रायंगल मिलेगा, ये अगेन आपको ट्रायंगल मिलेगा। ओके, तो इसकी विड्थ कैसी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 500 बाय EI। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगल को अपन ने फर्स्ट सेक्शन बोला, ये यहाँ से उसके नीचे जो ट्रायंगल मिल गया है इसको सेकेंड सेक्शन बोला, विच इज अ ट्रायंगल। और ये जो है ये थर्ड जो आपको डिवाइड करने के बाद थर्ड सेक्शन मिला, ये हो गया थर्ड रेक्टेंगल। ओके, थर्ड ट्रायंगल, सॉरी। तो एक सेक्शन रेक्टेंगल और सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इट इज अ ट्रायंगल। तो अभी इसमें टोटल जो है 500 बाय EI है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है I that is equal to 1. So this is 500 by EI, and this value is 200 by EI. This value is 200 by EI. Okay, so this is total is 500 by EI. तो ये आपका हो जाएगा, ये आपको जो मिलेगा that is 200 by 3 EI, because C to D चेंज हो रहा है, C to D चेंज हो रहा है। तो ये मिलेगा आपको, ये आपको जो दिख रहा है ये मिलेगा आपको 200 by 3 EI, that is equal to 200 by 3, that is 0.67। 200 by 3 है जितना ही आ रहा है। ओके, और ये टोटल 500 by EI। तो रेक्टेंगल का आपको 500 by EI minus 200 by EI, you will get 300 by EI। ओके, तो in this way you have to calculate this। so ये जो width रहेगी ये टोटल 500 है। so total 500 minus 200, you will get this is 300 by EI। okay, this 300 by EI, rectangle का 200 by EI, और for this it will become 200 by 3 EI। तो I वैल्यू चेंज होने की वजह से आपको 3 सेक्शंस मिल रहे हैं, 3 सेक्शंस मिल रहे हैं, 3 डिफरेंट सेक्शंस। ओके, फर्स्ट इज रेक्टेंगल,
second is triangle, and third is again triangle, and third is again triangle. Okay, so for these three sections you have to locate the value of P1, value of P2 and value of P3. ओके, तो पहला ये रेक्टेंगल, अभी इसका जो विड्थ है, इसका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया अपने को निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए यू कैन सी हियर फर्स्ट P1, P2, P3. तो P1 it is 200 by EI, P2 it is 300 by EI and P3 it is 200 by 3 EI. थर्ड रेक्टेंगल के लिए जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 200 बाय 3 EI। इसके लिए जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 200 बाय 3 EI। टोटल 500 बाय EI है। तो इसका रेक्टेंगल ये 200 बाय EI है, दिस 200 बाय EI। ओके, यहाँ पे मार्क किया है, यू कैन सी हियर दिस इज 200 बाय EI। ओके, टोटल इज 500 बाय EI, यानी बचा हुआ जो ये वाला विड्थ रहेगा वो रहेगा 300 बाई EI, 300 बाई EI। और ये जो विड्थ स्मॉलर जो रहेगी, एज I यहाँ से चेंज हो रहा है 3I, इसीलिए ये जो विड्थ रहेगी यू कैन सी हियर दिस इज 200 बाय 3 EI। ओके, तो रेक्टेंगल, फर्स्ट इज रेक्टेंगल, सेकंड इज ट्रायंगल एंड थर्ड इज अगेन ट्रायंगल। तो पहला इसके लिए अपन ने लिया है P1। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है 3 मीटर, तो ये जो हो जाएगा ये होगा 1.5, इसका CG होगा 1.5। ओके, सेकेंड सेक्शन के लिए जो ट्रायंगल है इसका हो जाएगा, ट्रायंगल का CG क्या रहता है B/3, B/3 यानी 3/3, यानी ये कितने डिस्टेंस पे लोकेट होगा 1 मीटर, P2। ओके, सो P1 is 1.5, you can see here, P2 is B/3, so B is 3, so 3/3 is 1। और ये थर्ड ट्रायंगल जो है, थर्ड ट्रायंगल का CG क्या रहेगा, इट इज अगेन B/3, B/3 दैट इज 2/3। सो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिखाया है दैट इज 0.67, लेकिन P3 आपको कहाँ से लोकेट करना है, A से लोकेट करना है। ओके, तो P3 दिस इज 0.67 प्लस 3, तो 3 प्लस 0.67 you will get location of P3 from this A, that is 3.67, and P2 का
Am audible? Yes, ma'am. Audible? There is a loss of connection again. Hello? Am audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, one thing you Yes, ma'am. do, यहाँ पे फिर से कनेक्शन लूज हो गया है। मैंने आज क्विज दिया है आपको, तो वो क्विज आप ये करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्विज आपकी अटेंडेंस मार्क होंगी, ठीक है। आर यू आई एम ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्विज के बेसिस पे अटेंडेंस आपकी मार्क होंगी। यहाँ पे फिर से कनेक्शन लूज हो गया है। और वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट टुमारो सेक्शन ए का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल टेक योर क्लास, आई विल कंडक्ट योर क्लास, बिकॉज आई हैव टू फिनिश अगेन वन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। एक क्लास लिया तो भी हो जाता है क्योंकि फ्राइडे से आपकी एग्जाम है, ठीक है। तो यू गिव मी 2 क्लासेस, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो सेक्शन ए का इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल आई विल कंडक्ट थ्योरी, सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के स्टूडेंट्स अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा तो यू गिव मी योर टाइम, आई विल टेक योर क्लास आल्सो। सेक्शन बी से कोई ज्वाइन है यहाँ पर? सेक्शन बी से कोई है क्या? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, connection. हाँ, सेक्शन बी से है क्या कोई? मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा हूँ ना अभी। मैम बहुत दूर आ रहा से मैम। ऐसा लग रहा। अभी आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो आज की अटेंडेंस क्विज दिया है मैंने, उससे आपकी काउंट होगी, ठीक है। और टुमारो प्रैक्टिकल है सेक्शन ए का, उसका थ्योरी में कन्वर्ट होगा। आई विल टेक द सेक्शन ए थ्योरी, और वैसे भी अभी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो सेक्शन बी में से कोई भी सीआर वगैरह होगा, आप डिसाइड करो और एक स्पैन मुझे दो आप, क्योंकि आपकी फ्राइडे से एग्जाम है। तो फिर से अगर आप थर्सडे को बंक करोगे तो एक सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, ठीक है। उसको एक क्लास लगता है पूरा कंप्लीट करने, और ये आज का थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मुझे कल फिनिश करना है,
तो I need 2 classes to complete your syllabus. So you decide yourself and tell me the span. सेक्शन ए का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका कल प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल होने के बाद आप सेक्शन बी फ्री है, तो आप प्रैक्टिकल होने के बाद आप क्लास कर सकते हो, या फिर वेडनेसडे को बताओ। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग? सेक्शन बी से जो कोई सीआर होगा उसको बताओ और एक मुझे बताओ, ठीक है? यस मैम। बाकी क्विज मैंने अपलोड किया है, वो क्विज सॉल्व करो, अकॉर्डिंगली आई विल गिव द अटेंडेंस। तो वो दोनों क्लास की लग जाएंगी, इसमें अभी आ जाएंगी नहीं ना पूरी अटेंडेंस, ठीक है? नाउ यू कैन लीव द क्लास।